Hello my students, how are you? Myself Pravat Sir, your chemistry teacher. Today again I am in front of you to present another topic in chemistry. So today we are going to discuss small topics but 4 topics, right? Small but 4 topics. So we are going to discuss them one by one. So let's start. What are those topics? See, first average atomic mass, second percentage composition, third percentage yield and fourth percentage purity. So we are going to discuss these 4: average atomic mass, percentage composition, percentage yield and percentage purity one by one. So what is average atomic mass? Average atomic mass कहले कौन बुझ्छ? We know in nature most of the elements are present in different isotopic forms with different percentage abundance. जेमते हम कहबा सपोज हाइड्रोजन अच्छी 3टा आइसोटोपिक फॉर्म रे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम. सो ताकर परसेंटेज भी डिफरेंट है. सपोज परसेंटेज अबंडेंस माने सपोज हम 100 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन नेले तादर किछि रहबो प्रोटियम, किछि रहबो ड्यूटेरियम, किछि रहबो ट्रिटियम. सेमती जदि हम क्लोरीन नबा किछि रहबो क्लोरीन 35, किछि रहबो क्लोरीन 37. सो ताकर परसेंटेज अबंडेंस डिफरेंट अछि. सो ताकर मास हम केमति कैलकुलेट करबा? जेम तुम क्लास रे कहवा सपोज 10 स्टूडेंट्स प्रेजेंट अच्छा, समस्त किए अच्छा 15+, किए अच्छा 16+, किए अच्छा 17+. तेल एवरेज मास एवरेज आम एज केमती कैलकुलेट करवा तुम क्लास रो स्टूडेंट कर बुझिपार. सो जी स्टूडेंट गोटे ग्रुप आसते आड करवा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर 10. सिमिलरली परसेंटेज अबंडेंस आम नवा ता सहित एवरेज एटॉमिक वेट नवा ता सहित आमको आइसोटोपिक मास नवा, देन वी विल बी एबल टू फाइंड द average atomic weight. You got this? Then we have to calculate the average atomic weight by considering the percentage abundance and isotopic mass. So what is the formula? The formula is average atomic mass is the sum of percentage abundance into isotopic mass divided by 100. The sum of percentage abundance into isotopic mass divided by 100. So that is what the average atomic weight is, right? ताले हमें गोटे क्वेश्चन डिस्कस करवा. इनफैक्ट 2टा क्वेश्चन हम डिस्कस करवा. फर्स्ट देछि कोन ना, क्लोरीन हैज आइसोटोप्स क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37. देयर आर 3 क्लोरीन 35 isotopes for every 1 क्लोरीन 37 isotope in a sample of chlorine. Calculate the atomic mass of chlorine or average atomic mass of chlorine. ताले एटी कोन देछि? जदि आम गोटे सैंपल नेले सो 3 क्लोरीन 35 रहिबो आ 1 क्लोरीन 37 रहिबो. ताल व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन 35. सो क्लोरीन 35 रे केते हबो ना 3 बाय टोटल केते हला 4 into 100 दैट इज 75. सिमिलरली क्लोरीन 37 केते हबो ना, that is 1/4 into 100 that is 25%. बुझा पड़ला? ताले what will be the average atomic weight of chlorine? ना percentage abundance 75 upon 100 into isotopic mass 35 plus similarly percentage abundance into isotopic mass 37. So after calculating you will get 35.5. Okay, so gram जदि हम कन्वर्ट करवा then that will be 35.5 gram. So बुझा पड़ला? Okay student, another thing, before going to see the solution, जहाँ भी क्वेश्चन दउची you have to pause the question and solve the question, right? You have to pause the question and solve the question. After solving the question then continue the video and check with the solution. Okay, so next is this. Natural hydrogen gas is a mixture of hydrogen 1 and 2 in the ratio of 5000 into 1. Calculate the atomic mass of hydrogen. Calculate the atomic mass of hydrogen. बुझा पड़ला? ताले आमे एठी कोन कहले जदि हम गोटे सैंपल नेले 5000 जदि प्रोटियम रहिबो ओनली 1 रहिबो ड्यूटेरियम. ट्रिटियम इज प्रेजेंट इन ट्रेसेस.
ट्रिटियम इज प्रेजेंट ट्रेसेस ताको आमे कंसीडर ही करूने कैलकुलेशन में पार्ट ही ताको कंसीडर करने ताले आमे केमती कैलकुलेट करिबा को सो व्हाट इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन नाउ पॉज द वीडियो सॉल्व द क्वेश्चन क्लियर सो एठी आमे केमती लिखियो को व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रोटियम दैट इज H1 सो टोटल केते हला टोटल इज 5001 and protium is 5000 into 100. Similarly, what is this is the percentage of H1 clear. Similarly, what is the percentage of H2 that is 1 upon 5001 into 100 सो परसेंटेज मिलगला परसेंटेज मिलला परे आमे कौन करिबा ना आमे कैलकुलेट करिबा व्हाट इज द एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन ताले कैलकुलेट करो फटाफट 5000 अपन 5001 5000 अपन 5001 into स्टूडेंट कैलकुलेट करो so it is coming 99.98 okay if it is coming 99.98 it will be 0.02 बुझा पड़ला so तुम परसेंटेज अबंडेंस मिल गला so what is average atomic weight percentage abundance into isotopic mass plus percentage abundance into isotopic mass so it is coming 0.99998 plus that is केता आसीबो को स्टूडेंट 0.04 divided by 100 plus 0.998 so it is coming 1.00002 exactly 1.000199 so approximately 1.00002 बुझा पड़ला so this is how we can find the average atomic weight of any element if the isotopic mass and percentage abundance both are given बुझा पड़ला student okay now going to the next topic that is percentage composition देन तुम क्लास रे सपोज तुम अच्छो 50 स्टूडेंट 50 रु 20 गर्ल्स अच्छी 30 बॉयज अच्छी सो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बॉयज इन द क्लास नंबर ऑफ बॉयज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू 100 सो दैट इज 30 upon 50 into 100 सो दैट इज 60%. सिमिलरली आम जो कंपाउंड नेले गोटे कंपाउंड रे सपोज CH4 नेले CH4 रे कार्बन केते अछि 12 ग्राम हाइड्रोजन केते अछि 4 ग्राम ताले परसेंटेज ऑफ कार्बन केते रहबो ना 12 upon टोटल मास 16 into 100 दैट इज 75%. परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन केते रहबो 4 upon 16 into 100 दैट इज 25%. सो बुझि परलो सो तामाने कोन ना परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास और बाय वेट ऑफ एनी एलिमेंट दैट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ दैट एलिमेंट टू द टोटल मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100. सो इट हला सिंपल जिंस. सो वी नो दैट द परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट in the compound is the number by parts by mass number of parts by mass of that element or the constituent present in 100 parts by mass of the compound. बुझी पारलो कंपाउंड को आम यदि प्रोजेक्ट करिबा 100 पार्ट्स रे से 100 पार्ट्स भितर जो एलिमेंट रो कि गोटे आयन रो आम परसेंटेज कैलकुलेट करिया चाहूचे सी केते अछि दैट इज द परसेंटेज. सो फर्स्ट कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड फ्रॉम इट्स फार्मूला by adding the atomic masses of the elements present in it multiplied by the respective number. Suppose carbon dioxide. So carbon dioxide carbon plus oxygen mass into 2. Kahe ki oxygen is present 2 in number, right? Then calculate the percentage of the element or constituent by using the relation mass percent of an element equal to mass of that element into 100 in the compound divided by molar mass of the compound. Okay.
So that is the simple formula to find the percentage composition of the mass. Next we are going to solve two questions. First, hemoglobin contains 0.33% of iron by mass. So जब hemoglobin नबा 100 ग्राम hemoglobin नबा इधर iron केते अछि 0.33 ग्राम अछि percentage. So molecular weight of hemoglobin is 67200 gram per mole, that is per mole 67200. Number of iron atoms per molecule, number of iron atoms per molecule. ताले हमें देठी formula लिखिबा. Student now तमे कोन करो, pause the video, solve the question. बुझि परलो? Then after solving एबे मु जो सॉल्यूशन लिखबा को जाउची, so you have to compare with your answer. So हम कोन लिखिबा ना percentage of iron in the compound, that is mass of iron into number of iron atoms, number of iron atoms divided by mass of hemoglobin into 100. Okay, so what is the percentage of iron given? That is 0.33 equal to mass of iron 56 into number of iron atom, let it be x, divided by, it is given 67200 mass of hemoglobin into 100. Okay, so after solving this you will get the value of x is 4. So what is 4? 4 means per molecule of hemoglobin 4 iron atoms are present. Per molecule of hemoglobin 4 iron atoms are present. So बुझी पारलो केमते हम कैलकुलेट करछे. So this is how we are calculating from percentage by weight of the element. So gote question clear. Now move to the next question. So next question kon deichi? Next question deichi insulin contains 3.4% sulfur. तुम जानछो insulin आजिकली गोटे बहुत बड़ प्रॉब्लम जो मैंने सुगर प्रॉब्लम अच्छे से इंसुलिन नौकरी इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट तो मेडिसिन नियंती तापर इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन, राइट. सो लिक्विड फॉर्म में नियंती. सो इंसुलिन रे कोन अछि ना 3.4% ऑफ सल्फर. देन व्हाट इज द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंसुलिन. ताले एठी हमें केमती मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करबा. सो द परसेंटेज ऑफ सल्फर हम पचरा जो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सल्फर बाय मास. केमती लिखिबा ना मास ऑफ सल्फर एठी किछि मेंशन करनी ता माने कंसीडर करे पड़े 1 sulfur is present per molecule of insulin. So mass of sulfur divided by mass of insulin into 100. So the formula is percentage of sulfur, that is equal to mass of sulfur divided by mass of insulin into 100. So you have to calculate mass of insulin. So how to calculate mass of insulin? Now that is mass of sulfur divided by percentage of sulfur into 100. So mass of sulfur kete 32 divided by, so percentage of sulfur this is given 3.4% into 100. So that is 3200 divided by 3.4. So it is coming approximately 941.176 gram per mole. बुझी पारलो 941.176 gram per mole. So this is the molecular mass of insulin. Okay students, so now average atomic weight is clear, then percentage composition by mass, that is also clear. So next topic that we are going to discuss is percentage yield. आम यील्ड आउ परसेंटेज प्यूरिटी भितर जनरली स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हुए. बुझीपार परसेंटेज यील्ड और परसेंटेज प्यूरिटी भितर स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हुए. परसेंटेज यील्ड माने कौन रिजल्ट कौटे आसे फाइनल जोटा आसे. सो गोटे रिएक्शन फाइनाली कौन बन गोटे रिएक्शन फाइनाली प्रोडक्ट बन जो परसेंटेज यील्ड देखुचे. सो दैट इज फॉर द प्रोडक्ट. और जो परसेंटेज प्यूरिटी आम कहार देखा ना जो हिसाब से रिएक्टेंट नवा जी प्योर रिएक्टेंट नवा से रेस्पेक्ट प्रोडक्ट बन. सो जो आम परसेंटेज यील्ड कहूचे दैट इज फॉर द रिएक्टेंट, परसेंटेज प्यूरिटी परसेंटेज यील्ड कहूचे दैट इज फॉर द प्रोडक्ट एंड परसेंटेज प्यूरिटी कहूचे दैट इज फॉर द रिएक्टेंट. बुझा पड़ा. नाउ आम देखा परसेंटेज यील्ड कौन
ना आम जी एक्सपेक्ट करूँ जी आम एक्सपेक्ट कर सपोज आम 50 ग्राम एक्सपेक्ट करूचे बट मिलला केते मिलला आमको 40 ग्राम सो एक्चुअल केते 40 ग्राम एक्सपेक्टेड केते थिला 50 ग्राम ताले परसेंटेज केते मिलला ना 40 अपन 50 इंटू 100 दैट इज 80%। बुझिपार ता माने परसेंटेज यील्ड रो फॉर्मूला कौन हम ना एक्चुअल मास डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल मास इंटू 100 एक्चुअल मास डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल मास इंटू 100 ना तो क्वेश्चन इज ये डिस्क्रिपेन्सी आसूची कहीं आम जो एक्सपेक्ट करूचे एक्सपेक्ट करिया डिफरेंट कहीं आसूची किसी ना किसी तो रीजन थी ना कौन रीजन थी ताको आम किसी पॉइंट रे समराइज करने जाऊे ताले आम बुझीपार सो रिएक्टेंट्स ऑफन यील्ड क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट्स दैट आर लेस देन दोज कैलकुलेटेड फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जी आम एक्सपेक्ट करुचे ताठू कम मिलूँ। सो रीजन बिहाइंड सच डिस्क्रिपेन्सी मे बी कहीं डिस्क्रिपेन्सी आसूची फर्स्ट सम ऑफ द रिएक्टेंट्स फेल टू अंडरगो रिएक्शन ड्यू टू लोअर अमाउंट एट द एंड माने जति आम रिएक्टेंट नौचे सबू कौन हुए सबू रिएक्ट करि पारंतनी किछि ना किछि रहि जांती जोटा आम लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट कहते किछि ना किछि रहि जांती हैला सो रहि जो यदि से प्रोडक्ट बनइबनी ताले परसेंटेज यील्ड हम जति एक्सपेक्ट करूचे सेटा बनिबनी क्लियर। सेकंड सम ऑफ द रिएक्टेंट्स फॉलो अदर रूट ऑफ रिएक्शन बुझि पारछ ता माने रिएक्टेंट गोटे प्रोडक्ट दउनी सो पैरेलल रिएक्शन दे दोची अलग गोटे प्रोडक्ट दे दोची सो अदर रूट ऑफ रिएक्शन रिजल्टिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनडिजायर्ड साइड प्रोडक्ट जहाँ बाई प्रोडक्ट कहचे सो जी आम एक्सपेक्ट करते सेटा बनूनी किसी अनएक्सपेक्टेड अनडिजायर्ड साइड प्रोडक्ट बनी जाऊँगी। सम ऑफ द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट रिकम्बाइन्स टू फॉर्म अदर अनडिजायर्ड प्रोडक्ट्स रिवर्टिंग टुवर्ड्स रिएक्टेंट आल्सो नोन एज द बैकवर्ड रिएक्शन ता माने कौन सो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनिला सो प्रोडक्ट रू किसी पुणी रिएक्टेंट को रिवर्ट होगला सो जब प्रोडक्ट रू रिएक्टेंट रिवर्ट होगला जी आम प्रोडक्ट एक्सपेक्ट करूँ ताठू कम बनव ताले कौन है परसेंटेज यील्ड कमीगला। नेक्स्ट द टोटल रिकवरी आइसोलेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजन्स द परसेंटेज यील्ड इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल दैट इज रिकवर्ड टू द थियोरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100 बुझा पड़े अपन ताने आम जो रीजन देले जमती कौन किसी रिएक्टेंट रिवर्सिबल जाऊँगी किसी प्रोडक्ट बनला किसी रिएक्टेंट को पुणी रिवर्सिबल जाऊँगी तापर कौन होची ना किसी अदर रूट माने पैरेलल रिएक्शन दे दोची पैरेलल रिएक्शन माने गोटे रिएक्टेंट दीटा अलग अलग प्रोडक्ट बनाऊँगी सो पैरेलल रिएक्शन देले गोटे कौन हम 100% यील्ड हेनी दीटा जगह यील्ड मिसिला 100% हम ताने गोटे यील्ड 100 रु लेस हम तापर आम कौन लिखिले सम ऑफ द रिएक्टेंट किसी रिएक्टेंट रिएक्शन करुच्चे किसी रिएक्टेंट रही होची जोटा आम लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट आगु को डिस्कस करवा है। सो ताले हमर परसेंटेज यील्ड रो फॉर्मूला कौन है एक्चुअल यील्ड जोटा आमको एक्जाक्ट बनी डिवाइडेड थियोरेटिकल जी आम एक्सपेक्ट करूँ इंटू 100 सो दैट इज व्हाट द परसेंटेज यील्ड इज। तापर स्टूडेंट एबे आम जीवा किछि क्वेश्चन डिस्कस करबा सो क्वेश्चन कौन फर्स्ट क्वेश्चन देख व्हेन 24 ग्राम ऑफ कार्बन अंडरगोज कंबस्शन कार्बन जब कंबस्शन हो कौन बनेबो कार्बन डाइऑक्साइड बनेबो इट फॉर्म्स 50 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैलकुलेट परसेंटेज यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट calculate percentage yield of the product. Now student pause the video and solve the question. After solving now see the solution. So what is the solution? First of all केमती approach करिबा देखो आमे आगो रिएक्शन लिखिबा कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू CO2 राइट सो कार्बन के देछि 24 ग्राम ऑक्सीजन सफिशिएंट अछि यदि ऑक्सीजन सफिशिएंट अछि आ कंबस्टन तो ऑक्सीजन सब सफिशिएंट ही थाए जे सफिशिएंट अछि ताको हमको देखिया दरकार नहीं सो जब आम बैलेंस्ड रिएक्शन देखिबो सो बैलेंस्ड रिएक्शन कौन अछि को बैलेंस्ड रिएक्शन रे आम कहि परिबा कार्बन 12 ग्राम सो कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम ताले यदि 24 ग्राम कार्बन अछि ताले केते कार्बन डाइऑक्साइड बनिबा कथा फटाफट कुआ सो 44 इंटू 2 बनिया कथा यदि कार्बन 12 रु 24 हैला डबल हैला ये 44 रु डबल हवा कथा 88 ग्राम हवा कथा सो 88 ग्राम कौन दैट इज द थियोरेटिकल दैट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू बट मिली केते 50 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिली ताले परसेंटेज यील्ड केते हबो ना परसेंटेज यील्ड हैला दैट इज एक्चुअल मास डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल मास इनटू 100 एक्चुअल मास डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल मास इनटू 100 ताले हमें केते रहिला को 5000 डिवाइडेड बाय 88 सो इट इज कमिंग 56.81 percentage 56
0.81%. So this is the answer. बुझा पड़ला तुम ये आंसर मिलता तुम सॉल्व कर गुड. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस वन मोर क्वेश्चन. जदि आम कैल्शियम कार्बोनेट को हिट करवा ताले कौन बन प्रोडक्ट कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड राइट. सिमिलरली आम जदि सिल्वर कार्बोनेट को हिट करवा ताले प्रोडक्ट कौन बन सिल्वर ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड नुहे कि नो दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर है सिल्वर ऑक्साइड बननी से सिल्वर बन कार्बन डाइऑक्साइड बन ऑक्सीजन बन. देखो कैल्शियम कार्बोनेट तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाऊला ये सिल्वर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन कहीं बन ना कैल्शियम इज रिएक्टिव मेटल सिल्वर इज लेस रिएक्टिव मेटल और नोबेल मेटल. सो नोबेल मेटल कार्बोनेट को आम जब हिट करवा ताले कौन हम नोबेल मेटल कार्बोनेट को आम जब हिट करवा ताले से कौन बनइब. सो दैट विल गिव द मेटल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन. ताले आम जब बैलेंस करवा 2 and this is half. Okay, this is half. Now it is clear students. देखी दियो अच्छा तुमका हाफ कहीं ना मोल कैलकुलेशन बोला ना हाफ मोल लिख पार हाफ मॉलिक्यूल एक्जिस्ट करे बट हाफ मोल तो एक्जिस्ट करे कहीं 1 मोल मीन 6.011 10^23. सो हाफ है के 3.011 10^23 तमाने हाफ मोल माने इट इज ऑल्सो ह्यूज नंबर. बुझीपार हाफ मॉलिक्यूल एक्जिस्ट करे बट हाफ मोल एक्जिस्ट करे. सो ये क्वेश्चन को देखो. So when 2.76 gram of silver carbonate undergoes decomposition, it forms 1 gram of the solid mass. ये solid mass किए रहिबो solid mass कार्बन डाइऑक्साइड ही रहिबो कहीं ना आमे देखिबा सॉरी solid mass सिल्वर ही रहिबो कहीं कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनिबो आउ ऑक्सीजन भी गैस बन के रिलीज हो. सो solid mass means only silver metal ही बनिला. बुझा पड़ला ताल कोएबे कौन बनिबो. सो what is the mass of silver carbonate? Silver mass है 108 into 216 plus the carbonate mass है 60 276 है ला. सो आम ये कहवा 276 ग्राम ये के 2 into 108 that is 216 ग्राम. आम कहीपर 276 ग्राम ऑफ silver carbonate gives 216 gram of silver metal that is the solid mass. एठी केते देछि 2.76 ग्राम देछि ताले एठी केते बनिया कथा 2.16 ग्राम बनिबा कथा बट केते बनिछि 1 ग्राम बनिछि. बुझि पालो आको हम सिंपल वे रे एमती करबो जोटा कि बेसी कैलकुलेशन लागिवनी. ताले एटा कोन हला दिस इज एक्सपेक्टेड थियोरेटिकल दिस इज थियोरेटिकल. ताले परसेंटेज यील्ड केते हबो को ना परसेंटेज यील्ड है एक्चुअल डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल इंटू 100. ताले 100 अपन 2 पॉइंट केते आसीबो 100 अपन 2.16. सो इट इज कमिंग 46.29%. बुझी पारलो. सो व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड ऑफ सिल्वर हियर इट इज 46.29%. बुझा पड़ला. सो परसेंटेज यील्ड माने आम प्रोडक्ट केते बनुची प्रोडक्ट रे केते परसेंटेज बनुची ताको हमें कैलकुलेट कले. स्टूडेंट नाउ गोइंग टू डिस्कस द लास्ट टॉपिक फॉर टुडेस लेक्चर. सो दैट इज परसेंटेज प्यूरिटी. दैट इज परसेंटेज प्यूरिटी. सो परसेंटेज प्यूरिटी मु कोन कहितली ना आम जेति की रिएक्टेंट नौचे सो रिएक्टेंट 100% कन्वर्ट होनी सो एला परसेंटेज यील्ड डिफरेंट होची. बट रिएक्टेंट रे इटसेल्फ जदि किछि इम्प्यूरिटीज अछि सपोज आम कार्बन सैंपल नेले सो कार्बन सैंपल 100% कार्बन ना ता सहित किसी अनडिजायर्ड प्रोडक्ट अच्छी अनडिजायर्ड सब्सटेंसेस मिसिक अच्छी ताले अनडिजायर्ड जो सब्सटेंस थो सी तो कार्बन भली रिएक्ट करबनी ताले प्रोडक्ट आम जो एक्सपेक्ट करूचे से कार्बन ही प्रोडक्ट दब ता माने तार प्यूरिटी 100% रहिलानी. सो ये आम कौन लिखा ना परसेंटेज प्यूरिटी इज द परसेंटेज ऑफ द मटेरियल व्हिच इज द एक्चुअली डिजायर्ड केमिकल इन द इन अ सैंपल ऑफ इट. आम जो सैंपल नौचे एक्चुअल जो अच्छी से तार परसेंटेज प्यूरिटी. सो आपको हम केमती कैलकुलेट करवा ना परसेंट प्यूरिटी इक्वल टू मास ऑफ द यूजफुल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय इन टोटल मास ऑफ द सैंपल इनटू 100. तामाने केते यूजफुल प्रोडक्ट रे कन्वर्ट होईची ताकू आमे कोथरे कहा रेस्पेक्ट नबा ना मास ऑफ द सैंपल जोटा नैचे इनटू 100. सो दैट इज व्हाट द परसेंटेज प्यूरिटी इज. बुझ पारलो. सो परसेंटेज प्यूरिटी आमे कहा पे कैलकुलेट करूचे ना परसेंटेज प्यूरिटी आमे कैलकुलेट करचे रिएक्टेंट रो केते परसेंटेज
अच्छी जोटा आमर डिजायरेबल प्रॉडक्ट दउची जोटा डिजायर्ड प्रॉडक्ट दउची सो नाउ 5 ग्राम इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट तामाने एठी कोन देछि कंटेन सम वोलाटाइल इम्प्योरिटी जोटा कैल्शियम कार्बोनेट प्योर नो जेटा इम्प्योर अछि ऑन हीटिंग प्रोड्यूसेस 2.2 ग्राम ऑफ रेसिड्यू फाइंड द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सो स्टूडेंट again I am repeating pause the video and solve the question then after solving now again come to see the solution so what is the solution so solution is first when calcium carbonate solid undergoes heating it forms calcium oxide solid and carbon dioxide gas एटी कौन पचार ना फाइंड द रेसिड्यू मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड तो यदि आम नवा ये 100 ग्राम सो इट शुड गिव 56 ग्राम एंड इट इज 44 ग्राम जदि आम 5 ग्राम नौचे 5 ग्राम मान के हवा कथा ये हवा कथा 2.8 ग्राम हवा कथा निजे कैलकुलेट कर देखिपर 5 ग्राम शुड गिव 2.8 ग्राम बट with respect to 2.8 gram how much is present only 2.2 gram is present so what is the percentage of or percentage purity so percentage purity हमें क्या रेस्पेक्ट नवा ना 2.2 डिवाइडेड बाय 2.8 into 100 2.2 डिवाइडेड बाय 2.8 into 100 so it is coming 78.6% approximately आम कहीं ना रिएक्टेंट जी थिला सो रिएक्टेंट जोटा एक्चुअल कैल्शियम कार्बोनेट थिला से तो कैल्शियम ऑक्साइड कन्वर्ट होती सो प्रोडक्ट रेशियो जहाँ ना रिएक्टेंट रेशियो नहीं कि हम देखिपर ओके सो ताले परसेंटेज प्यूरिटी के ना 78.6% नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेस लेक्चर 5 gram sample of hydrogen gas undergoes combustion in the presence of sufficient oxygen to form 36 gram of water. What is the percentage purity of hydrogen? So now तमे निजे सॉल्व कला परे सॉल्यूशन देखिबो आगो सॉल्यूशन देखिबोनी सो हाइड्रोजन undergoes combustion with oxygen to form water बुझा पड़ला hydrogen undergoes combustion with oxygen to form water so this is the balanced reaction so जदि मैं 5 ग्राम देइछि 5 ग्राम देइछि 5 ग्राम that is equal to ताले मोल केते हबो ना it is 2.5 मोल बुझा पड़ला 2.5 मोल so 2 moles of hydrogen gives 2 moles of water so 2.5 moles of hydrogen should give 2.5 mole of water so 2.5 मोल माने मास केते हबो ना 2.5 into 18 ओके सो 2.5 into 18 सो ये कौन हैला ना दिस इज द मास ऑफ वाटर ताले हमर मिलिछि केते ना 36 ग्राम ऑफ वाटर मिलिछि सो 2.5 into 18 को केते आसिला ना इट इज 45 ग्राम 45 ग्राम आसीबा कथा बट आसीछि केते 36 ग्राम ताले परसेंटेज प्यूरिटी केमती कैलकुलेट करिबा ना एक्चुअल मास 36 डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल मास 45 into 100 so 9 4 जा 9 5 जा ओके सो it is 20 so what is the percentage purity of the sample that is the sample of hydrogen so that is 80% pure बुझा पड़ला स्टूडेंट so that is 80% pure so student today we have discussed 4 small concepts that is average atomic mass percentage composition percentage yield and percentage purity so आमे सबू टॉपिक रु दीटा क्वेश्चन भी डिस्कस कले सो आई होप ये चार्टा जाय कॉन्सेप्ट तुमर निश्चय क्लारिटी आसीथिबो आ सहित तुम किछि निजे भी क्वेश्चन ट्राए कर आ जदि भी किछि डिफिकल्टी होछि सो वीडियो रो तळे तुम कमेंट लिख आ डेफिनेटली आमे तापय नेक्स्ट वीडियो रे ताको इंप्रूव करिया ट्राए करिबा अगेन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब प्रभात केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल आ तुम फ्रेंड मान को सजेस्ट करो जदि तुमको भल लागु तुम फ्रेंड मान को सजेस्ट करो आउ जेमति हम लास्ट वीडियो रे कहिथिले एबे भी कहूची जे तुम कि चाहूचो तुम पसंद रो किछि वीडियो बनिया पई जोडा तुम पे दरकार अछि सो डेफिनेटली तुम कौन करो ना से कमेंट करो
सो जदि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गोटे पर्टिकुलर टॉपिक में कमेंट करेंगे सो डेफिनेटली मुझे वीडियो को आग प्रायोरिटी दे से वीडियो को बनैबी से ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक फिजिकल हो दैट डजंट मैटर ओके स्टूडेंट्स सो आई विश ऑल ऑफ यू वेरी ऑल द बेस्ट गॉड ब्लेस यू